Assalamu Alaikum warahmatullah. Dear candidates, can you hear me? You have to reply in chat. In chat, talking about. Is my voice clear to you? And this the candidate with the name best laptop. Can you please mention your name in the chat? Okay. Okay. Fine. And if possible, you can start recording at your end. Recording at local system, local machine. In case of any issue, you can let us know. Okay, we are starting the session. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Our today's session's goal is that we'll be learning how to teach the first lesson to the students. And some of you maybe some of you are experienced. They are teaching at some other academies, and some of you are new. And but the thing is that for those who are experienced, we respect के उनका एक्सपीरियंस है वो जैसे पढ़ाते हैं that's okay. हर एकेडमी का ऐसे होता है कि वो उनका एक डिफरेंट होता है कि वो बताते हैं कि इस लेसन को इस तरह पढ़ाना है टू देयर टीचर्स. दे ट्रेन एंड दे टीच देम कि पहला लेसन आपने किस तरह पढ़ाना है, सेकंड लेसन किस तरह पढ़ाना है, थर्ड लेसन. तो इस सेंस में ये हर एकेडमी टू एकेडमी ये चीज़ें डिफर करती हैं. बट इन आवर केस हम ये पीडीएफ कॉपी यूज़ करते हैं नूरानी कायदा. और ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कायदा है ये देखें, आई हैव ओपन दिस पीडीएफ डॉक्यूमेंट इन एज ब्राउज़र. ये एज ब्राउज़र और विंडोज़ 10 का जो एज ब्राउज़र है, एक टीचर हमारा जो टीचर होता है वो विंडोज़ 10 का एज ब्राउज़र यूज़ करता है. और ये एज ब्राउज़र सपोर्ट करता है ये पेन को. दिस इज़ पेन. ठीक है, एक तो पेन यूज़ होगा नॉर्मली, एंड ये दिस इज़ इरेजर. और ये टेक्स्ट की राइटिंग के लिए मतलब टेक्स्ट अगर कुछ भी आपने लिखना हो तो ये टेक्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये यूज़ होता है. ओके, ये पेन है. पेन यू कैन यूज़ दिस डिफरेंट कलर्स, और यहाँ से आप थिकनेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, और यू कैन आस्क द स्टूडेंट उनका फेवरेट कलर कौन सा है, एंड यू कैन चूज दैट कलर फॉर पेंसिल. ओके, देन दिस इज इरेजर. इरेजर पेंसिल पे काम करती है. फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग समथिंग. अब इसको मैंने इरेज करना है तो आई विल बी यूजिंग दिस इरेजर. एंड ये टेक्स्ट है. टेक्स्ट का ऑप्शन ये, फॉर एग्जांपल आई हैव रिटन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. ये रोमन में मैंने जो लिखा हुआ है ये आई रोट दिस अऊज़ु बिल्लाह विद द हेल्प ऑफ दिस टूल. टेक्स्ट का जो टूल है ये भी मैंने इसी से लिखा है. तो यू हैव टू यूज टेक्स्ट ऑप्शन, टेक्स्ट टूल, अगर आपने कुछ लिख के उनको स्टूडेंट को बताना हो. ओके, टू बी अ गुड टीचर one must be good with with the usage of these tools. क्लास को मतलब क्लास में कोई चीज़ एलैबोरेट करनी हो या एंगेजमेंट आपने बढ़ानी हो तो आपको ये टूल्स अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए. ओके, अब स्टूडेंट्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं. कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें हम बिगिनर कहते हैं.
जो कि बिल्कुल बिगिनर ट्रीट होते हैं, जिनको मसलन के ये भी नहीं आता अलिफ बा था सा क्या होता है। ऐसे ऐसे अक्सर स्टूडेंट बिल्कुल मतलब छोटी एज के होते हैं ज़्यादातर, मतलब 5 इयर्स 6 इयर्स ऐसे होते हैं, 7 इयर्स। उनको ये बिल्कुल नहीं आता, अलिफ बा की कुछ पहचान नहीं होती। या ऐसे भी होते हैं एजेड होते हैं लेकिन उनको भी नहीं आती। समटाइम्स स्टूडेंट कुड बी आई मीन रिवर्ट रिवर्ट जो होते हैं उनको नहीं आता, तो वो भी बिगिनर ट्रीट होते हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जिनको ये आता है, मतलब कायदा आता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ सकते, उनको हम बिगिनर बिगिनर नहीं कहते, तो वो बिगिनर कैटेगरी में नहीं आते। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं वो कुरान पढ़ सकते हैं लेकिन उनकी मिस्टेक्स आती हैं, मिस्टेक्स वो कर रहे होते हैं, तजवीद ठीक नहीं होती या बाकी फ्लुएंसी ठीक नहीं होती, तो वो भी बिगिनर ट्रीट नहीं होते। अच्छा, अब ये बताने का क्या मकसद है कि बिगिनर और बाकी स्टूडेंट, क्योंकि इनको एक बिगिनर को पढ़ाने का जो मेथडोलॉजी है वो एक डिफरेंट होगी। एक ऐसा स्टूडेंट जो जो बिगिनर नहीं है, पेस का डिफरेंस होगा। बिगिनर जो होगा वो उसके लिए आप स्लो पेस से जाएंगे, वो टाइम लेगा आपकी बात समझने में। लेकिन एक जो बिगिनर नहीं है, ऐसे स्टूडेंट जो बिगिनर नहीं है, उनको भी बातें आप वही बताएंगे लेकिन ही और शी विल नॉट टेक दैट मच टाइम, और वो आपकी बात को जल्दी ग्रिप कर लेंगे। ओके, अब इस लेसन को पढ़ाते हुए देखें, ये एक फर्स्ट पेज है जिसपे ये जो letters हैं, these alphabets are supported by these English lines, अलिफ बा ता सा। तो इस पेज पे ये अल्फाबेट्स इंग्लिश लाइन से सपोर्टेड हैं, एंड नेक्स्ट पेज पे विल नॉट सी द इंग्लिश लाइंस अंडर दीज अल्फाबेट्स। अच्छा, अब इस पेज का क्या फ़ायदा है? इस पेज का ये फ़ायदा है कि जो बिगिनर्स होते हैं उनको ए बी सी आती हैं, ए बी सी ये उनको आती है, तो वो इसकी मदद से पढ़ सकते हैं। तो उनको हम स्टार्ट करवाते हैं कि ओके, यू हैव टू रीड बाय लुकिंग एट दिस लाइन। सो दिस इज अलिफ, दिस इज बा, दिस इज ता, दिस इज सा, दिस इज जी। तो उनको स्टार्ट करते हैं हम इस लाइन की हेल्प से, ये जो इंग्लिश लाइन हैं। और जब उनको ये आ जाता है, ये पेज इन इंग्लिश लाइंस की मदद से लिखते हैं, तो उसके बाद क्या करते हैं कि आप ये पेंसिल की मदद से थिकनेस को इंक्रीज कर दें, कोई भी कलर चूज कर लें, एंड यू टेल देम ओके, अब आपको ये यू हैव डन दिस लेसन विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड व्हाट विल डू नाउ, आई विल बी हायरिंग, बीइंग अ टीचर आप उन्हें बताते हैं स्टूडेंट को, नाउ आई विल बी हायरिंग these English lines and you have to say the same lesson without looking at these lines, ठीक है। So फिर आप उन्हें ओके, एक दफ़ा तो आपने उन्हें बता दिया कि हम अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने वाले हैं, तो व्हाट विल डू इन द नेक्स्ट स्टेप या नेक्स्ट एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, देन यू गिव देम टाइम। तो आपने उन्हें टाइम देना है, और फॉर एग्जांपल यू टेल देम कि ओके, उनका नाम जो भी है, फॉर एग्जांपल ईसा, नाउ टेक योर टाइम प्लीज एंड हैव अ लुक एट फर्स्ट लाइन। I'll be giving you two minutes या कुछ भी उनको टाइम दे दें, and after that time I'll be hiring these English English lines, and I'll be asking you about this line, okay? So once you give them time, वो उसको तैयार करेंगे, then you ask them okay ready, तो जब वो कहते हैं yes I'm ready, तो you hide these lines this way, and then you ask them okay what's this, so they tell them alif, and what's this, this is ba, and this is ta, good, and this is ta, and what's this, this is jim, okay, and what's this is ha। तो इस तरह वो यहाँ तक करेंगे, तो उनको लाइन बाय लाइन लेके जाएं कि वंस दे आर डन विद द फर्स्ट लाइन, एक लाइन उन कर लिए, देन यू टेक देम टू द सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, और ये एंड तक। तो सेकंड स्टेप पे आपने ये लेसन करवाना है इस तरह हाइड करके, इस तरह हाइड करके ये उन्हें करवाना है। और जब आप लेसन कराते हैं तो साथ साथ डॉट्स के बारे में भी बताते जाएं कि ओके दिस इज अलिफ, सी दिस इज बा, एंड दिस इज ता। Ba has one dot at the bottom, so ta has two dots at the top, and this is ta, ta has three dots at the top.
तो जो बिगिनर्स हैं ये नॉर्मली इसको जो स्टूडेंट्स होते हैं गलत प्रोनाउंस करते हैं, सा पढ़ते हैं, सा विस्लिंग साउंड। तो ये सा नहीं होता, ये सा होता है, सा। और इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है या इसका मखरज क्या है? सा का मखरज है, ओके, दिस इज द शीट जिसकी हेल्प से आपने मखरज के बारे में बताना है, इन अल्फ़ाबेट्स के मखरज के बारे में। फॉर एग्जांपल, you want to teach about the makhraj of tha. You tell them that the makhraj of tha is that we touch the tip of the tongue to the tip of upper front two teeth. Tha, 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 ठीक है। अगर स्टूडेंट ये करेक्टली टच कर पाए टिप ऑफ द टंग को, टिप ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ, जैसे आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो वो जो साउंड है वो ऑटोमेटिकली खुद ही खुद ब खुद ठीक ही आएगी, मतलब उसमें कोई इशू नहीं आएगा। तो यू गिव देम इंस्ट्रक्शन कि आपने ये करना है, एंड देन यू टेल देम कि जी आप इसको पढ़ें इस तरह, और ओके नाउ से दिस वे एंड फील इट, जैसा आपने बताया है इस तरह बोलें और उसको फील करें कि आपकी जो टंग है वो टच कर रही है इधर, सा सा, सा। तो ये आपने इस तरह किसी भी लेटर का मखरज बताते हैं। ओके, स्टेप्स ये हैं इस लेसन को पढ़ाने के। पहले उन्हें बताएं कि देख के पढ़ना आना चाहिए, रीड बाय लुकिंग एट द स्क्रीन, ये वाली एक्टिविटी करवानी है। और इसके साथ साथ आपने प्रोनाउंसिएशन, अब देखें प्रोनाउंसिएशन एक तो सब लेटर्स की आपने नहीं बतानी, अभी आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में बताया जाएगा। मखरज, प्रोनाउंसिएशन मींस मखरज या मखरज मींस प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन सब स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाई जाती, प्रोनाउंसिएशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है जो उस बात को ग्रिप कर पाएँ। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट इज जस्ट 4 या 5 और उनको अगर आप प्रोनाउंसिएशन का बताएंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कॉम्प्लेक्सिटी या वो समझ ना पाएँ, तो फिर उन पे प्रोनाउंसिएशन पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना। वाइज अगर वो समझ पाते हैं तो आपने उनको प्रोनाउंसिएशन इन्फोर्स करवानी है, उन मतलब उनको कहना है कि आपने इसी तरह ही पढ़ना है। ओके, थर्ड स्टेप में आपने ये जो बोल्ड बोल्ड टोन या डीप टोन या हैवी टोन लेटर्स जो हैं इनके बारे में बताना है। दीज ग्रीन कलर्ड लेटर्स आर डीप टोन या हैवी टोन या बोल्ड टोन लेटर्स। सो यू कैन टेल देम ओके काउंट द ग्रीन कलर्ड लेटर्स, तो ये 8 लेटर्स हैं एंड इसके बारे में आपने बताना है। देन इज डॉट्स एक्टिविटी, क्या आपने डॉट्स के बारे में उनको पढ़ाना है कि विच लेटर हैज हाउ मेनी डॉट्स एंड डॉट्स की क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल, अलिफ हैज नो डॉट या अलिफ इज डॉटलेस, ba has 1 dot at the bottom, ta has 2 dots at the top, sa has 3 dots at the top, and jim has 1 dot in the middle. So इस तरह डॉट की एक्टिविटी करवानी है। देन इज आपने ये जो अल्फाबेट्स हैं ये उनको मेमोराइज करवाने हैं। ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट पॉइंट कि बाय लुकिंग एट द स्क्रीन आपने किस तरह उनको पढ़ाना है। अगर बिगिनर्स हैं तो उनको इंग्लिश इसकी मदद से इसकी सपोर्ट से आपने पढ़ाना है। और अगर वो बिगिनर्स नहीं है, अलिफ बा ता सा आता है मतलब उनको, तो यू कैन टेक देम टू दिस पेज, ठीक है। और बिगिनर्स का बताया कि पहले इंग्लिश की हेल्प से आपने यहाँ तक करवा देना है, यहाँ तक। देन सेकंड स्टेप पे आपने इनको हाइड करके और उनको टाइम दे के वो करवाना है। ओके, अब आपने मखरज का अगर किसी को बताना है, लेट्स सी कि मखरज किस तरह पढ़ाने हैं और किसका क्या मखरज है। मखरज सिर्फ इम्पोर्टेंट लेटर्स जो हैं उनके बताने मतलब आपने टीच करने हैं। इम्पोर्टेंट लेटर्स में एक तो ये सा आता है, सा। देन दिस इज जीम, हा, खौ, देन दाल, एंड ये डीप टोन है, रॉ। ओके, एंड देन ये जो थ्रोटल लेटर्स हैं, आइन, गईन, हा, हमजा, इनका खौफ का, इनके जो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं मखरज आपने बताने हैं। ओके, लेट्स सी मखरज हैं क्या।
मखरज के लिए आपको इस शीट की हेल्प लेनी होगी. For example, if you were to teach the student about the makhraj of tha, so as I told you earlier, the makhraj of tha is that the tip of the tongue touches the tip of upper front two teeth. Tha, tha, tha. So ये वन लाइनर है. तो इन लेटर्स की मखरज के लिए आपको वन लाइनर आना चाहिए कि इसको किस तरह स्टूडेंट को कन्वे करना है. Same is the makhraj for zal and for dha, but this one will be pronounced in deep tone. Dha, dha. ठीक है. This is zal, this is dha. So the makhraj of dha, zal, and dha is that the tip of the tongue touches the tip of upper front two teeth. Whereas in case of ta, dal, and tha, these three, ta, dal, and tha, for these, the tip of the tongue touches the roots of upper front two teeth and from inner side. Yes. Ta, dal, and pa, pa. This one will be pronounced in deep tone as well. Okay. Sister Abel, are you getting? You can unmute your mic. Yes, I get you. Okay. And Sister Nabila, are you getting? Yes, sir. And Sister Tahreem, got it? Yes, sir. Okay. So this makhraj is shared by these three letters: ta, dal, and pa. Okay. Ta, dal, and pa. Okay. Okay, about Jim, Sheen, and Ya, their makhraj is that almost the middle part of the tongue touches the upper middle part of your mouth. Jim, Sheen, Ya. Okay. Jim, Sheen, and Ya ke liye almost the middle part of the tongue touches the upper middle part of your mouth. Okay. दौद के केस में ये जो साइड्स हैं, ये जो मोल्स हैं इनकी साइड को टच करती हैं. और राइट साइड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी एक साइड यूज कर सकते हैं. अगर राइट साइड टंग की राइट साइड यूज करेंगे तो वो राइट साइड पे टच होगी. अगर लेफ्ट साइड यूज करेंगे तो इट विल बी टचिंग द लेफ्ट साइड ऑफ मोल्स. ओके. देन this is ba. Ba, the makhraj of ba is that. Okay, बा और मीम का मखरज सिमिलर है. बा के केस में भी लिप्स यूज होते हैं, लिप्स आपस में टच करेंगे. द इनर पार्ट्स ऑफ द लिप्स टच टुगेदर. ठीक है, जो इनर पार्ट्स हैं लिप्स के वो टच करेंगे बा के केस में, और इनर पार्ट्स को हम वेट पार्ट्स भी कह सकते हैं. जबकि मीम के केस में, इन केस ऑफ मीम, द आउटर पार्ट्स ऑफ लिप्स टच टुगेदर. ठीक है, आउटर पार्ट्स जो हैं लिप्स के वो आपस में टच करेंगे. Okay, then this is about the throttle letters. Throttle letters important है, इनके बारे में आपने बताना है और ये इनकी करेक्शन भी करवानी है स्टूडेंट्स को कि इनको किस तरह प्रोनाउंस किया जाता है और सही तरीका क्या है. अब these 6 letters are called throttle letters और इनको याद करने के लिए हमजा हा in pairs, हमजा हा, आइन हा, गैन खा. ठीक है, गैन खा. The upper ones are also must be pronounced in deep tone as well. So these two should be pronounced in deep tone as well. See, we'll see green color for them. Kha, ghain in green color. अब देखें at the moment मैंने आपको बोल्ड टोन या डीप टोन के बारे में नहीं बताया. अगर आपने भी स्टूडेंट को नहीं बताया तो आप उन्हें बता सकते हैं कि डीप टोन क्या होता है. एंड विल सी कि डीप टोन क्या होता है. डीप टोन, ये जो ग्रीन कलर लेटर्स हैं ये डीप टोन में प्रोनाउंस करने हैं. ख, र, सौद, दौद, तो,
ghain, and qaf. And how to teach, how to convey this thing to the students? आपने उनको डिफरेंस बताना है कि लाइट टोन और डीप टोन का क्या फर्क है. So you say, okay, now see, I'll be pronouncing this letter I'll be pronouncing this letter 2 times, and you have to tell me if you feel any difference between two sounds or not. Okay, I'm saying it kha, saying kho, kha, kho. Okay, you pronounce it in 2 ways. Then you ask them, okay, now you ask the student, okay, now you have to tell me which one is the deep tone. Okay, so Nabila, you have to tell me which one is the deep tone, the first one or the second one. Sorry, yes, which one is the deep tone? The first one or the second one? The second one. Okay, so the same way you have to ask the student, and you have to convey this thing to the student. Okay, what's the difference between light tone? Okay, the first one is light tone. बारीक को हम क्या कहते हैं? Light tone. And the second one is deep tone या heavy tone या जो भी उसके लिए use कर लें. Okay. Similarly, this is raw, not ra. Raw, sod, dod, thaw, thaw. अब होता क्या है कि स्टूडेंट इसको स्वाद पढ़ेंगे. सो इट्स नॉट स्वाद. अगर वो स्वाद पढ़ते हैं तो यू टेल देम नो इट्स स्वाद, इट्स स्वाद. आप इस यू को मिटा सकते हैं. सी आई सिलेक्टेड वाइट कलर और मैं थिकनेस बढ़ा के ये जो यू है इसको आप इरेज कर दें. यू टेल देम नो दिस इज स्वाद इन डीप टोन. साद इन डीप टोन, स्वाद, स्वाद. दिस इज दौद, दौद. ये दौद नहीं है, ये दौद, डीप टोन. अब ये त्वा नहीं है, दिस इज तो. जस्ट लाइक दिस ता, ये भी ता है बट इन डीप टोन. तो, तो. अब जस्ट लाइक दिस जा, ये भी जा है बट इसका मखरज ये है कि टिप ऑफ द टंग टचेस टिप ऑफ अपर फ्रंट टू टीथ. तो उसकी वजह से ये सॉफ्ट टोन में आएगा. और ये ज़्वा नहीं होगा, ये ज़ौ होगा. ज़ौ, ज़ौ. अच्छा, 3 लेटर्स को हम सॉफ्ट लेटर्स कहते हैं. सा, जाल एंड ज़ौ को ये सॉफ्ट लेटर्स कहलाते हैं. और इनका मखरज एक कि टिप ऑफ द टंग टचेस टिप ऑफ अपर फ्रंट टीथ. सा, जाल एंड ज़ौ. ओके, सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द डीप टोन के डीप टोन लेटर्स आपने किस तरह कन्वे करने हैं. सो खौ, रॉ, सॉद, दौद, तौ, ज़ौ, गैन एंड कॉफ, कॉफ. Okay, fine. So these six letters are throttle letters. The upper two are pronounced in deep tone as well. Okay, makhraj of ghain and kha is that these two are pronounced from the upper part of the throat, from the upper part of the throat. So आपने ये बताने के बाद you have to ask them, okay, what's this? तो उनका ये correct करवाना है. ghain, ghain, ghain. Then this is kha, kha, kha. Okay, अब कुछ स्टूडेंट्स को ये समटाइम्स ऐसा होता है इनको खा नहीं बोलते, वो खा खा इस तरह कहते हैं. तो इसको किस तरह करेक्ट करवाते हैं? यू टेल देम कि अच्छा ख साउंड, ख साउंड. तो इस साउंड पे आपने लाना होता है. ये प्रोनाउंस करना आ जाए, फिर खा उनका उस तरीके से करेक्ट करवाना होता है. इसी तरह ये गॉइन को गॉइन बोलेंगे, तो इसको करेक्ट करवाने के लिए पहले गौ साउंड उनसे प्रोनाउंस करवाएं. गौ की प्रैक्टिस करवाएं. और गौ जब वो सही प्रोनाउंस कर लेंगे तो दे विल बी एबल टू प्रोनाउंस गैन एज वेल. तो इन 2 लेटर्स में ये इशू आता है. खा को खा इजीली प्रोनाउंस कर पाते हैं, लेकिन खा नहीं करते, तो वो ठीक करवाना होता है. गैन को गॉइन पढ़ते हैं, तो वो आपने इस तरह ठीक करवाना है, गौ साउंड पे. ओके, then these 2 letters are pronounced from the middle part of the throat. आइन, हा, हा. इसकी प्रैक्टिस करवानी होती है. हा, ha, ha. There is a difference between this ha and this ha.
So this ha, see I have selected white color, so it's not visible. So this is ha, and this is ha. This is ha. We name it round ha, but we read it as ha. So ये कहने को तो गोल हा है, but पढ़ने में हा ही है. Okay. So the makhraj of ha and ayn is that the middle part of the these two are pronounced from the middle part of the throat. Okay. Next two are hamza, 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 hamza is ha ke saath, with this ha, hamza, hamza, and this is ha, round ha. These two are pronounced from the bottom part of the throat. These two are pronounced from the bottom part of the throat. देखें अब एक तो सेंटेंस बोले जाते हैं और सेंटेंस के साथ मतलब जुबान के साथ आपने हेल्प लेनी है पेंसिल की मदद से आपने समझाना है. और okay, these two are pronounced from the middle part of the throat, or you may say that these two are pronounced from the starting point of the chest. Almost जहाँ chest start होती है वहां से pronounce किए जाते हैं. हमजा, ha, ha, ha. Okay. See, हमने मखरज देखे ये throttle letters के, and मीम का भी हमने मखरज देखा. We saw the makhraj of ba, then dod, then jim, sheen, ya ka. We saw the makhraj of jim, sheen, and ya. और इसका क्या है कि the middle part of the throat, the middle part of the tongue touches the upper middle part of the mouth for these three, jim, sheen, and ya. Okay, then we saw the makhraj of these three, ta, dal, and dha. Okay, we also saw the makhraj of ta, dal, and tha. इनका क्या है कि the tip of the tongue touches the roots of upper front two teeth. Okay, now let's look at the makhraj of qaf and kaf. Okay. First this one, this is qaf in deep tone, qaf in deep tone. Okay. For qaf, the root of the tongue touches. Okay. ये जो है कुछ स्टूडेंट इसको इनर टंग कहते हैं और कुछ को इसको पता ही नहीं होता कि इसका क्या कहता है. तो you tell them कि this is inner tongue or uvula. uvula वैसे इसके लिए सही वर्ड है जो इंग्लिश का है, uvula. I don't know क्या स्पेलिंग है इसकी, UVULA होगा शायद. You can Google it. Uvula. So the makhraj of qaf is that the root of the tongue touches just behind the uvula, or just behind this part of body. And ये बताने के बाद you tell them कि okay, now you have to say it and feel it. Feel करेंगे बाकी जो मैंने बताया आपको ये correct भी है या नहीं है. So they say and they'll tell you कि ऐसा है, whether they are feeling this thing or not. Qaf, qaf, qaf. Okay, this one is kaf, the lighter one. Almost this part of the tongue touches in front of your uvula when you pronounce kaf, kaf, kaf. Okay. So with this, we are done with the makhraj part. अब देखें इसमें से important कौन से हैं, मतलब जो आपने बताने हैं. Important में आते हैं, एक तो ये सा का मखरज important है, सा, जाल and धा का. उसके बाद ये कॉफ काफ का मखरज. देन ये जो थ्रोटल लेटर्स हैं, थ्रोटल लेटर्स जो हैं हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इनका. एंड यस, ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के आपने उनको मखरज बताने हैं. और मखरज किनको बताने हैं, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो के मतलब वो बच्चे हैं, वो आपकी बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे या कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उनको तो नहीं बताना. लेकिन अगर कोई बिगिनर है एंड शी इज उनकी इतनी एज है कि वो मेच्योर
ही और शी इज मेच्योर इनफ कि वो आपकी बात को ग्राइंड कर पाए, डाइजेस्ट कर पाए, तो उनको आपने कन्वे करना है। और उसमें क्या है, ये सा, जाल, ज़ा। अच्छा, बच्चों के केस में आपने मखरज बता तो दें, लेकिन और ये ठीक भी करवा दें, सा, जाल, ज़ा, लेकिन अगर वो ठीक से ना पढ़ पाए, सा को कुछ और ता से मिला दें, तो देन यू कैन टेक देम बाय सा ही फिर उनको पढ़ा दें। सा बजाय ता पढ़ने लग जाए, इसको सा ही उनको पढ़ा देना। इसी तरह ये जाल को अगर वो समझ ना पाए, तो देन जाल, फिर जाल उनको पढ़ा दें। इसी तरह ये ज़ा को सही ना प्रोनाउंस करें, तो फिर लास्ट ऑप्शन के तौर पे जा, वो भी ऐसे स्टूडेंट्स जो आपकी बात को समझ ना पा रहे हो, यानी बच्चों के केस में अक्सर ये होता है। ओके, सो मखरज का भी हमने कर लिया है। वी आर डन with the first part with the pronunciation यानी मखरज है, और then the third part bold tone या deep tone या heavy tone letters के बारे में हमने कर लिया। okay, then you go for the dots activity। dots activity क्या है? okay, once you are done with this part, first part, you can leave this page। जब स्टूडेंट्स को आ गया है, इंग्लिश को देखे बगैर वो पढ़ पा रहे हैं इस लेसन को, यू कैन गो टू दिस पेज। अब यहाँ से आप उनको ऑनवर्ड्स लेके जाएं। ओके, अब आपने क्या करना है कि डॉट्स एक्टिविटी करवानी है। यू टेल देम ओके, नाउ विल बी डूइंग द डॉट्स एक्टिविटी। डॉट्स एक्टिविटी किस तरह करेंगे? यू टेल देम ओके, हाउ विल बी डूइंग द डॉट्स एक्टिविटी? सी अलिफ हैज हाउ मेनी डॉट्स? यू आस्क देम ओके, हाउ मेनी डॉट्स, and they'll tell you okay, no dot। and what about ba? Ba has how many dots? One। and what's the, I mean, um place of the dot? So it's at the bottom, so the dot could be at the bottom, it could be either at the bottom, it could be at the top, or it could be in the middle। ठीक है, ये एक मिडल में भी हो सकता है। सो I will say alif has no dot, or alif is dotless, ba has one dot at the bottom, ta has two dots at the top, tha has three dots at the top, jim has one dot in the middle, ha has no dot, kha has one dot at the top, dal has no dot, zal has one dot at the top, ra has no dot, za has one dot at the top, sin has no dot, sheen has three dots at the top, sod has no dot, dod has one dot at the top। हमारे यहाँ इसको ज़ौद भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मतलब पाकिस्तान में, लेकिन इसको दौद, एकेडमी में हम इसको दौद पढ़ाते हैं, दौद। ओके, दौद हैज वन डॉट एट द टॉप, no dot, dha has one dot at the top, ain has no dot, ghain has one dot at the top, fa has one dot at the top, qaf has two dots at the top, kaf has no dot, lam has no dot, meme has no dot, noon has, we'll say it one dot at the top, because in next lesson you'll see the dot will be at the top, we'll not say one dot in the middle। तो आप स्टूडेंट को बताते हैं कि for this one we'll say the dot is at the top, क्योंकि आगे नून के ऊपर ही होगा, आगे जब देखेंगे तो वो मिडल में नहीं होगा। ओके, वाव हैज no dot, ha has no dot, hamza has no dot, ya has two dots at the bottom, and again ya has two dots at the bottom। ओके, इसी तरह आप साथ साथ ये भी बता सकते हैं ओके, this is ba, one dot at the bottom is for ba, and this one has two dots at the top, so this is ta, and this one has three dots at the top, so this is ta। okay, jim has one dot in the middle, ha has no dot, kha has one dot at the top। okay, see, this is dal, and dal getting a dot at the top becomes dal। this is raw, raw getting a dot at the top becomes za। this is seen, no dot, seen getting three dots at the top becomes sheen। इसी तरह this is sod, dotless, no dot, sod getting a dot at the top becomes dod। this is paw, paw getting a dot at the top becomes dha। this is ain, ain getting a dot at the top becomes ghain। okay, ghain। ठीक है, this is fa, fa getting a top, sorry, fa has one dot and qaf has two dots at the top। अच्छा, इस एक्टिविटी करवाने का क्या मकसद था? फॉर एग्जांपल दिस आइन, आइन, आइन गेटिंग अ डॉट एट द टॉप बिकम्स गाइन। इसका करवाने का ये मकसद है, जब आप नेक्स्ट में आप उनको ये चार्ट करवाएंगे जिसमें डिफरेंट शेप्स देखेंगे, तो यहाँ जब वो एक आइन है, आइन पे इसी तरह की आइन की तरह की शेप होगी,
और अगर उस पे जो भी आइन की शेप है उस पे अगर डॉट आ जाएगा तो वो आइन बन जाएगा. दिस शेप गेटिंग अ डॉट एट द टॉप आइन. दिस इज आइन गेटिंग अ डॉट एट द टॉप becomes आइन. This is ain getting a dot at the top becomes ain. This is also ain. This is fa, one dot at the top, and two dots are for qaf, fa. This is qaf, this is fa, this is qaf. Okay. ये नेक्स्ट स्टेप आपने करवाना है once you are done with this lesson. Okay. So ये डॉट्स एक्टिविटी आपने इस तरह उनको करवानी है. एंड इस तरह आपने उनको मतलब होगा क्या कि आपने टाइम देना है. यू गिव देम टाइम. ओके. नाउ हैव अ लुक एट फर्स्ट टू लाइंस. एक लाइन या दो लाइन को उनको टास्क दें और गिव देम टाइम. और आफ्टर दैट you tell them, okay, after that I'll be hiding my screen. I'll be hiding my screen this way and I'll be asking you about the dots. ठीक है. तो आप इस तरह भी कर सकते हैं या another way is that कि आप इस लेटर को ही हाइड कर दें. सिर्फ उन लेटर्स को. इसकी थिकनेस बढ़ाएं पेंसिल की and you hide them. Hide the letters this way. इस तरह ये आप हाइड करेंगे. You ask them, okay, this is alif and alif has how many dots? And this is ba, ba has how many dots? So dots कितने हैं और उनकी क्या पोजीशन है? You have to ask these two things. कितने डॉट्स और क्या उनकी पोजीशन है. इस तरह आपने याद तक उनको करवाना है. ओके. देन इज मेमोराइजेशन. इस लेसन को ये लेसन उनको जुबानी भी आना चाहिए. और मेमोराइजेशन किस तरह होगी? अगेन आप उनको टाइम, यू गिव देम टाइम के ओके नाउ विल मेमोराइज दिस लेसन एंड टेक योर टाइम or take 2 minutes and have a look at first line. Okay, and after that I'll be hiding the first line this way. I'll be hiding the first line this way and I'll be asking you about these letters. तो आपने वो टाइम देने के बाद will be hiding the line this way and आपने इस तरह पूछना, okay, what's this? This is if. And what's this? This is ba. It's good. And what's this? तो इस तरह जीम तक वो करते हैं. फिर you give them time, second line, third line, और आखिर यहाँ तक आपने इस तरह लेके जाना है और ये मेमोराइज करवा देना है उनको. ओके. ओके. हम एक चीज छोड़ गए हैं कि जब जैसे लेसन स्टार्ट करते हैं तो आपने ये 3 चीजें करवानी है. अऊज़ु बिल्लाह. अऊज़ु बिल्लाह आप इसकी मदद से पढ़ा सकते हैं. ओके. सी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा. आमीन. So before starting every session, being a teacher, you'll say these 3 lines first and then you'll ask the student to say these lines. अगर वो नहीं पढ़ पाते तो आप पहले पढ़ेंगे and they'll be following you or they'll be saying these lines after you. ठीक है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अब जो बिल्कुल बिगिनर्स होते हैं समटाइम रिवर्स या ऐसे बच्चे जो इंग्लिश को तो समझ पाते हैं लेकिन औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह नहीं आती तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दीज लाइंस. ओके. तो ये एक तो स्टेप्स आपने ये थे स्टेप्स इस लेसन में जो आपने पढ़ाने हैं. अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नेजल कुछ स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि लेटर्स को नाक में पढ़ते हैं बिल्कुल ही. जैसे कि ये जीम है, इसको क्या पढ़ेंगे? जीम. जीम पढ़ेंगे. साउंड को गैर जरूरी तौर पे नाक में लेके जाएंगे. अब सी दिस इज जीम. जीम. इसको जीम पढ़ेंगे. तो ये किस तरह हमें पता चलेगा कि हम नाक में आवाज लेके जा रहे हैं या क्या? तो यू कैन टेल द स्टूडेंट और आप खुद भी चेक कर सकते हैं. ये फॉर एग्जांपल नोज है, इसको यहाँ से होल्ड करें और क्लोज करें. नेजल को क्लोज करें, बंद करें. तो अब देखें मैं अपने नेजल को क्लोज करता हूँ एंड आई से जीम इन रॉन्ग वे. जीम. जीम.
so I'm feeling resistance in my nose. ठीक है, आवाज का जो साउंड है वो रेजिस्टेंस फील कर रही है नोज में। तो ये एक मतलब दिस इज दी आई मीन ये एक निशानी है कि ये गलत पढ़ा जा रहा है। ओके, नाउ अगेन आई एम होल्डिंग माय नोज, और अब मैं इसको आई विल बी रीडिंग दिस वन इन करेक्ट वे। जी जी, नाक में सिर्फ मीम की आवाज आनी चाहिए। अब ये जो पार्ट है जी जो है, दिस पार्ट शुड नॉट कम आउट फ्रॉम नोज, दिस शुड कम आउट फ्रॉम माउथ और फ्रॉम थ्रोट, फ्रॉम माउथ। ठीक है, जी जी पार्ट शुड कम आउट फ्रॉम माउथ। इसी तरह ये सीन है, नॉट सीन, सीन सीन, दिस सी। तो ये ठीक किस तरह करवाते हैं, यू टेल देम कि ओके आपने सिर्फ सी पढ़ना है, सी, सीन नहीं पढ़ना, सी पढ़ें। सी सही पढ़ा है। ओके, नाउ ऐड न साउंड, न साउंड एंड पे ऐड कर दें। इसी तरह म साउंड एंड पे ऐड कर दें, जी के एंड पे म साउंड, सो जी। इसी तरह ये शीन, ये जो शी पार्ट है ये नाक से नहीं आना चाहिए। इसी तरह आइन के केस में ये जो आई है, आई, आई पार्ट नाक से ना आए, आई। इसी तरह ये गॉइन, तो ये गॉई पार्ट जो है ये नाक से ना आए, गॉई। इसी तरह ये लाम के केस में, ला जो है, ला, स्टूडेंट्स को क्या पढ़ते हैं, अब देखें इफ आई से इट इन रॉन्ग वे, लाम लाम, लाम इज रॉन्ग। और अब दोबारा अगर मैं अपने नेजल्स को होल्ड करूं, ला ला, तो ये ला पार्ट जो है ये नाक से ना आए। इसी तरह मीम के केस में जो मिडिल पार्ट है ये नाक से ना आए, मतलब अब इसको गलत पढ़ेंगे तो क्या होगा, पीप पीप, दिस इज रॉन्ग। सही क्या है, पीप पीप। एम जो है, only these two M should be, I mean, these two should be pronounced from or should come out from nose, but these the middle part E should come out from the mouth. इसी तरह नून के केस में एन जो है वो तो ठीक है, वो नाक से ही आएगा, लेकिन ये मिडिल पार्ट जो है नून, नून, ये नून है, नून। ठीक है, तो ये चीजें आपने इस लेसन में पढ़ानी है। And we are done with today's session. In the next session, we'll see कि ये जो different shapes वाला है इसको किस तरह पढ़ाया जाता है, इसका context किस तरह build किया जाता है। So these were the letters, ये letters हैं, these were the alphabets, and alphabets join up together to form words. Just like in English language, we have the alphabets A, B, C. They join up to form words. See, this is and. What's this? You can ask the student, what's this? This is and. It's a word. Okay? And it's made up of E, N, and D. So E is an alphabet, N is an alphabet, D is also alphabet. So they join up to form a word. Similarly, in Arabic language, these alphabets join up together to form words. But the thing is that when these alphabets, these Arabic alphabets join up to form words, they adopt different shapes. तो इनकी ये मुख्तलिफ shapes adopt करते हैं. And now we'll be, तो ये inshallah we'll be looking at this chart in the next session inshallah. Or being a teacher, we should be good. We should be very good with these I mean starting lessons. ये जो शुरू के lessons हैं ये आपकी command को या expertise को show करते हैं ये lessons. अब आपने ये lesson पढ़ा दिया, step wise आपने पढ़ाया है, तो ये आपकी expertise है कि आपने सारे steps करवाएं और अच्छे तरीके से करवाएं। इसी तरह जब आप next lesson पे लेके जाएंगे तो यहाँ भी आपकी expertise show होती है जब आप इसको सही तरीके से समझा के इस चार्ट को करवाते हैं। और इस चार्ट को करवाने के बाद नेक्स्ट चार्ट पे आपने अगेन डिफरेंट शेप्स का टेस्ट लिया जाता है, और इस टेस्ट के बाद देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट लेसन अलिफ लाम अलिफ। सो वी आर डन विद टुडेज सेशन, और इंशाल्लाह विल हैव अ सेशन टुमारो। लेकिन हम टुमारो का जो सेशन होगा उसका हम टाइम चेंज करेंगे इंशाल्लाह, उसे कुछ मतलब अर्लियर होगा इससे, and we'll be coordinating with you on WhatsApp inshallah about the timing inshallah. So thank you so much for joining us in this session. We'll have a session tomorrow. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullah.